China's trade deficit with the US is $295 billion. India's is 46. So China is about 6 times more than India, and tariffs on China are 30%. The deficit of European Union is $226 billion, which is 5 times more than India, and the tariffs there are 15%. In 2024, India bought 49 billion euros worth of Russian oil. How much did China buy? 78 billion. It's almost double. And yet there is no penalty on China, it's only on India. In the same period, European Union bought 22 billion euros worth of gas. And we are not talking about coal and other things here. How much penalty do they get? No. On the contrary, they are trying to impose sanctions. This is pure bullying, dadagiri. We are not European Unions. We can manage our own security. We can manage our own energy. India has not, India will not deal with us. India don't seem to have that kind of leverage on US so that we can, hit back or similarly. Are you trying to say that the GDP of 4 trillion has no leverage? We are contributing 17% to global growth. Is that not leverage? पानी की तरह होता है ट्रेड, जहाँ जगह होती है वहाँ बह जाता है। तो अभी तक जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, अचानक कैसे होगा? अचानक तो नहीं होगा, सिस्टमैटिकली चल रहा है काफी सालों से। सारे ईयू के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं हमारे ओआरएफ में, सबका सब एक ही उनका लक्ष्य होता है कि भाई ईयू इंडिया एफटीए फटाफट साइन। ये विन विन है दोनों के लिए विन विन है। मार्केट्स बहुत हैं, मेहनत करनी पड़ेगी और हो रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई स्पेस है, क्योंकि ट्रंप भी समझता है भारत की इतनी बड़ी बाजार है, भारत चाइना का काउंटर बैलेंस है। जो मेरा अनुमान है वो ये है कि डील मेकिंग चल रही है, और ये इस प्रकार के जो स्टांसेस ले रहा है ट्रंप, 50%, 80%, 100%, 250%, तो ये मनगढ़ंत नंबर्स हैं। नेगोशिएटिंग टेबल पे मैं 200 बोलूंगा तो शायद 100 पे मान जाए, 100 बोलूंगा शायद 50। सब्जी मंडी वाला सिस्टम, सब्जी मंडी वाला हो रहा है। टैरिफ्स का प्राइस इंपैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर अगले 3 या 4 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। Gautam ji, first of all, thank you so much for giving us time for this interview and explainer on what these US tariffs are. Can you just, I will start straight away from my question. What are these tariffs and what will be its implication by and large, if you can give us some kind of analysis in short? The question is so big that a short analysis is virtually impossible, but I'll try. Yeah. Trump imposed a 25% tariff on a very random basis, and I'll come to that. In addition, because we are buying Russian oil, he has imposed an additional penalty of 25%, taking our total tariffs on Indian goods, on 70% of Indian goods, to 50%. For instance, drugs are exempt. But we are all trying to find some logic in something which is completely illogical. It's very random. There is no mathematics to this. There is no logic. There is no cause and effect in this. So I'll come to that. For instance, he's imposing tariffs because he says the trade deficits are too high. Okay, so China's trade deficit with the US is $295 billion. India's is 46, so China is about 6 times more than India, and tariffs on China are 30%. The deficit of European Union is $226 billion, which is 5 times more than India, and the tariffs there are 15%. The deficit of Vietnam is $172 billion, which is 4 times India's. The deficit with Mexico, sorry, that was Mexico. Vietnam is a little less, 124, that is 3 times of India. So all these 4 countries have a much lower tariff put on them compared to India. Now let's come to the Russian oil, which is a penalty. India bought in 2024, which is the latest data available for me, although there are monthly changes that keep happening. In 2024, India bought 49 billion euros worth of Russian oil. How much did China buy? 78 billion euros. So it's almost double. And yet there is no penalty on China, it's only on India. In the same period, European Union bought 22 billion euros worth of gas. And we are not talking about coal and other things yet. How much penalty do they get? No. On the contrary, they are trying to impose sanctions.
They are financing their own war. They are financing Russia against. If India is buying oil, is financing Russia's war, then EU financing Russia is equally financing the Russian war against Ukraine. With America, trade has grown by 20% ever since Trump has come, according to Putin. And also recent revelation that they are trying to strike energy deals with them again. That's right. So I think this is all hypocrisy. This is bullying. For people like us who function on policy parameters, on numbers, on analysis, we have no space left anymore. This is pure bullying, dadagiri. And how do you explain dadagiri to anybody? How do you explain why a bully is acting in this way? He will say, I want X. You give him X, he will move the gaze to Y. You give him Y, he will take it to Z. And we are not European Unions. We are not dependent on security. We can manage our own security. We can manage our own energy. We can manage our own markets. We can manage our own fertility. Europe cannot. And therefore, Europe has bent down. That humiliating photograph of all the leaders in White House, it's a shame. And I think that's partly because they are very focused on getting the deal right. They're very focused on their dependency. They're very focused on NATO. They're very focused on financing this war, fighting against Putin, etc., etc. India is not. To put India in the same basket and expect India to kneel down is, you're talking about two different cultures, two different stances. Many other countries in Asia have bent down. India has not, India will not deal with us. But so the argument there is that China has a huge leverage because it's giving them rare earth and things like that. Similarly, EU is a big market, and as you said, security considerations are there. India don't seem to have that kind of leverage on US so that we can, hit back or similarly arm twist like these countries are doing. I can agree with that in terms of goods, services, etc. I can agree with that. Even in terms of GDP, we are nowhere near China. But we are the fourth largest. So after China, there is Germany, and then there is India, maybe Japan in the middle. So are you trying to say that the GDP of 4 trillion has no leverage? Maybe that's your calculus. It is certainly not my calculus. Secondly, India's contribution to global growth. We saw the numbers yesterday, 7.8% GDP growth. This may or may not continue, but overall we are looking at a 6.5 to 7% GDP growth year on year, which translates into a nominal growth adding inflation to 8.5 to 9, maybe 10 if inflation rises or if growth increases. We are contributing 17% to global growth. Is that not leverage? Won't any country want to be part of this growth? If not, okay, we will handle our growth on our own. We will find new markets. But now coming to that, how are we going to diversify? Because what I have learned in the basics of economics is that वो पानी की तरह होता है ट्रेड, जहाँ जगह होती है वहाँ बह जाता है. तो अभी तक वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, अचानक कैसे होगा? अचानक तो नहीं होगा, सिस्टमैटिकली चल रहा है काफ़ी सालों से. जैसे अभी हमने इंडिया यूके FTA साइन किया है. यहाँ पे आप समझ लो एक नई मार्केट, एक नई दिशा मिली है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की. एंड ऑफ द ईयर तक हमें EU के साथ FTA हो जाएगा. सारे EU के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं हमारे ORF में, सबका सब एक ही उनका लक्ष्य होता है कि भाई EU इंडिया FTA फटाफट साइन. ये विन विन है दोनों के लिए विन विन है. ठीक है, तो ये भी हो जाना चाहिए, मुझे लगता है हो जाएगा. फिर ईस्ट की तरफ अगर आप जाएं तो पूरी साउथ एशिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, अलग अलग देश हैं. अगर आप फार वेस्ट की तरफ जाएं तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो पूरा साउथ अमेरिका है. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स नहीं है, अफ्रीका है बीच में पूरा. अफ्रीका को तो हमने कितने सालों से इन्वेस्ट किया है इसके अंदर. तो मार्केट्स बहुत हैं, मेहनत करनी पड़ेगी और हो रही है. ऐसा नहीं के प्रोडक्ट के साथ क्या इंडिया मैच कर पाता है? उनकी वायबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी क्या बोलते हैं जो सप्लाई चेन का सिस्टम है, उसके साथ क्या भारत मैचअप कर पाता है इन कंट्रीज में अगर डाइवर्सिफाई करना है तो? ऑलरेडी these countries which you mentioned have a big market for Chinese goods. So to topple that and bring India in is also another challenge. I think maybe the bigger challenge to sort out than the US. I would agree with that because Chinese goods are very good.
and ghar ghar mein, despite the Himalayan tensions at the defense and security level, the trade with India's trade with China has grown. Imports have grown. So there is no doubt those products are good. Those products are cheap. And for this, all I would say is let's have our internal reforms. We keep talking about reforms, but somehow we just are unable to move on those reforms. Gautamji, when you say of reforms, can you please let us know what are these reforms? Some people think, like laymen like us, they think that GST, easing of GST is reform. Are you referring to the same thing? No, easing of GST is not a reform, because reform happened in 2015 when the GST was introduced. Yes. It was a very big reform, one of the most powerful, most difficult reforms difficult economic reforms that any government has ever brought. So that reform has happened. Now it's a tinkering with rates. It is easing of rates, perhaps. It is easing of structures into two-part, etc., etc. So I wouldn't call this a reform. I would call this policy. Reform would be something like, let us say, compliance reforms. We had brought out this report, Jailed for Doing Business. I think you reported on it, where we enumerated 26,134 provisions under which a businessman can be jailed. This is 3 years ago. Now it must have grown, is our suspicion. We haven't done the numbers yet again. And there are 69,233 total compliances. This entire burden of compliances on the entrepreneur prevents him from working faster, being more productive. The harassment of the Inspector Raj that can come and destroy his business, shut it down at whims, is another danger. So I think this is the low-hanging fruit. This can be very easily fixed. Jan Vishwas 1 removed 113 imprisonment provisions. Jan Vishwas 2, which came about few weeks ago, has removed another, I think 300 or 400 provisions. These are steps in right direction. These are steps. Now the Jan Vishwas 3 needs to come, and we need an overhaul of compliances that makes doing business easier. The second reform that can come is labor reforms. Most of the compliance reforms are also related to labor reforms. The Factories Act, for instance, has 71% of all compliances are in the Factories Act. If you actually, the reform has happened. The 29 labor laws have already been converted into 4 labor codes. Only the notification remains. So why the government is not notifying it, the government knows best. But that is the other big reform. We believe that if that reform comes, we would reduce our imprisonment clauses by around 50%. The third big reform Modi ji tried in 2021-22, which was the agricultural reforms. My sense is it is going to be extremely difficult to have those reforms on farmers, particularly because of the kind of protests we saw. Maybe it needs a better communication strategy, or we can leave agriculture to where it belongs. But if these two reforms, compliance reforms and labor reforms, happen, I think it is going to be a 1991 moment. Do you think it will offset the tariffs and everything? Of course not. But it will help speeden up the restructuring that is necessary. Right. It will ease doing business. It will reduce costs. Logistics costs have already reduced. The port time have fallen from 15 days to 24 hours or 48 hours. So all these are compounding together. They are increasing. This is also what is adding to our growth. But to say that we will do this reform and tomorrow we will counter US tariffs, no, that is not going to happen. Because gems and jewelry alone, there is $11.9 billion worth of trade that is being impacted. In textiles, it's $3.1 billion. In shrimps exports, which is a small part of agricultural exports, $2.5 billion. Altogether, about 45 million people are going to be affected. 4 crores. So, do you suggest that government should help them initially? Absolutely, and I think the government has come out that we are behind you, we will help you, etc. But how it does it is. So, are you looking at a bailout kind of a thing? No, I think it's going to be support. That suppose your goods are worth X and you need a little subsidy, that may be given. A rebate may be given. And I think this should be done very, very carefully because there are enough scoundrels in the system who may want to just make good. And finally, you must understand what is the government giving? It is giving our taxes to a certain thing. Yeah. So if it's a realignment, it's okay. If it's a time-bound thing, it's okay. But it cannot be a permanent thing. And so government will have to be a very, very careful
while giving this, and I'm certain that the government is. For instance, during the COVID time, we saw a similar policy dynamism, tweaking, and which worked very well. And it's gone back. Likewise, if this is a small crisis, let's deal with it. It is 7.4% of total exports. So for a $4 trillion economy, it's big, but it is not crucial. It's 1.6% of GDP. So it's okay. गौतम जी, आपने ऐसे बोला स्टार्टिंग में कि लॉजिक फेल हो गई है और आप जैसे जो पॉलिसी में काम करते हैं उन लोगों के लिए कोई रूम छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई स्पेस है? क्योंकि ट्रम्प भी समझता है भारत की इतनी बड़ी बाजार है, भारत चाइना का काउंटर बैलेंस है, अल्टीमेटली चाइना वर्सेस यूएस ही रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। अभी ट्रम्प का दौर आएगा, चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन चाइना और यूएस की राइवलरी इस तरह से खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम स्पेस। आज टॉस है कि नंबर 1 और नंबर 2 कौन है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी कोई स्पेस है कि भारत जिसको कैप्चर कर सकता है? और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी भी चाइना में हैं, तो आपको लगता है कि जो एक जियो स्ट्रैटेजिक स्टेप्स इंडिया ले रहा है, इससे कोई डील मेकिंग हो पाएगी आने वाले टाइम पे ट्रम्प के साथ? मेरा अनुमान है वो ये है कि डील मेकिंग चल रही है, बैकग्राउंड पे डिस्कशंस हो रहे हैं, और ये इस प्रकार के जो स्टांसेस ले रहा है ट्रम्प, 50%, 80%, 100%, 250%, इन्होंने चाइना को धमकी दी है कि 200% टैक्स लगा तो ये मनगढ़ंत नंबर्स हैं। मुझे एक डिप्लोमेट ने बोला कि मैं रात को 3 बजे रोज उठ जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता नींद खराब हो गई है कि आज वो ट्रम्प साहब क्या ट्वीट कर देंगे और आज हमारा ट्रुथ पे डालेंगे और हमारी टैक्स आज 200%, 300% क्या लगा देंगे, कुछ पता नहीं। तो अगर लग भी जाए तो मुझे लगता है ये ना एक स्टांस है नेगोशिएटिंग टेबल पे। मैं 200 बोलूंगा तो शायद 100 पे मान जाए, 100 बोलूंगा शायद सब्जी मंडी वाला सिस्टम, सब्जी मंडी वाला हो रहा है। तो ये इफ यू वांट अ काइंड वे टू लुक एट, एंड इफ यू आर एक्सप्लोरिंग लॉजिक, दिस कैन बी द ओनली लॉजिक कि मैं आई विल इंक्रीज द स्टेक सो हाई दैट you will be forced to come halfway. So that is one. On the other side, we may be looking at a G2 world. What happens if China and USA shake hands together? So and China no longer becomes an adversary, but they work together. For instance, on critical minerals, rare earths, technologies. But don't you think this looks far-flung? Very far-flung. But I'm just giving you hypothetical imaginations. Finally, a lot of people are saying that because US is behaving in the manner it is, we should now run to China. Please calm down. We need to fix that part first. China has to become less adversarial. And do you think China is a fool? Can't it see the kind of problems that India in? It will squeeze India. And we should not be jumping into China's arena. I don't think so that's happening. As a ricochet. If there is a relationship of equality, that's good. But if China is going to continue to harass India on the borders, if it's going to continue to support Pakistani terror, if it is going to support Pakistani defense, and India expects that we should move to China, be warned, this will be very dangerous. But do you see this happening? A lot of people are suggesting it. So I don't know. I'm just afraid that in the short term ricochet, because Trump has done this, so let's run there. तुम जी ऑलरेडी ट्रेड तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है दोनों मुल्कों में, कुछ रुका तो है नहीं, जैसा आपने खुद भी देखा है। अगर आप नंबर्स देखें नहीं, तो मगर ये तो एक्सपोनेंशियल है। जैसे ये टूथपेस्ट और टेडी बेयर्स की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिकल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। वहां अगर चाइना अंदर घुसने लगे, टेलीकॉम इक्विपमेंट हुआवे जैसे आने लगे, ये सब तो हम हुआवे एक समय आ ही गया था ऑलमोस्ट। पोर्ट्स उनको दे दें जैसे श्रीलंका ने दिया है या पनामा ने दिया था। तो इन चीजों के अंदर हमें सतर्क रहना है। बाकी तो टेडी बेयर से हमें फर्क नहीं पड़ता, सस्ता टेडी बेयर मिल गया ले लो, अगर उनकी सस्ती वो गाड़ियां आ रही हैं ले लो। बट जहां भी क्रिटिकल चीज, आपको एग्जांपल बताता हूं, और नॉन क्रिटिकल के अंदर भी डेंजर है चाइना का। जैसे जो टेडी बेयर में भी कुछ हो सकता है। जो चाइना ने जो क्रेन्स भेजी हैं अमेरिका को उनके पोर्ट्स के लिए, सारे पोर्ट्स नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स के करीब रहते हैं। उन क्रेन्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, उन क्रेन्स के अंदर दे हैव फाउंड मोडेम्स विच आर रिकॉर्डिंग एंड स्पाइंग। तो अगर जो देश टोटली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे, स्पाइंग पे, कंट्रोल द वर्ल्ड पे उभरा है और शी जिनपिंग के अंडर एक्सेलरेट हुआ है,
उस देश के साथ आप जाके क्या हाथ मिलाओगे? अगर मिलाओगे भी तो स्ट्रेटेजिक हाथ होना चाहिए। तो अब मैं आखिरी सवाल की तरफ पहुंच गया हूँ, आपका बहुत टाइम हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब आप हमें ये बताइए कि एक आम जनता के लिए क्या असर पड़ने वाला है टैरिफ्स का उनकी जेब पर? क्योंकि हमने तो बड़ी बड़ी बातें की, चाइना, अमेरिका, ये वो, लेकिन आम आदमी देखता है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, इस पर बात चल रही है। हमारी जेब पे उसका क्या असर पड़ेगा और कब तक पड़ेगा? अभी तो लेकिन कल जो नंबर्स आए हैं कि 7.8 हमारे जीडीपी के क्वार्टर के, वो तो बहुत प्रोत्साहित करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद जो इम्पैक्ट है वो अभी आएगा आने वाले समय पे। तो ये सवाल को दो भागों में करना है। तो ट्रंप के टैरिफ्स अमेरिका पे लागू हैं, हम पे नहीं। तो हमारे को हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर उन टैरिफ्स के कारण अगर बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा तो नौकरियों पे खतरा हो सकता है, मार्केट्स पे खतरा हो सकता है, हमारे एक्सपोर्ट्स को खतरा हो सकता है। डायरेक्टली जो चीज मैं 100 रुपए की खरीद रहा हूँ मेरे को अंतर नहीं पड़ेगा, जो मैं 100 की ही खरीद रहा हूँ, जो अमेरिकन 100 रुपए में खरीद रहा है वो अब 150 देगा। तो टैरिफ्स का प्राइस इंपैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर अगले 3 या 4 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हर डेमोक्रेसी के लीडरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पॉलिटिक्स कोई फाइट नहीं कर सकता और वो अमेरिका में आते इनएविटेबल है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वो ट्रंप फोर्स कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स घट जाएं। इससे बड़ी डेंजरस चीज है ही नहीं। कैसे फर्स्ट कि अगर पैसा सस्ता हो गया, ज्यादा पैसा आ गया मार्केट के अंदर, वो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। तो एक तरफ से आपने टैरिफ्स बढ़ाए, दूसरी तरफ से आपने ईज ऑफ मॉनिटरी ईजिंग कर दी, तो मोर मनी इन द सिस्टम। तो जो 100 रुपए की चीज थी, जो 150 रुपए में आप भारत से आज खरीद रहे हो, वो 200 की होने में भी कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी इज परसुइंग मोर मनी इज परसुइंग द सेम गुड्स। सो वहां पे इंपैक्ट होगा। यहाँ पे हमें अपने रोजगार, अपने एसएमई सेक्टर, अपने फार्मर्स, अपने टेक्सटाइल्स, अपने जेम्स एंड ज्वेलरी के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ध्यान देना है। हमारे डे टू डे खरीदारी में इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं। कल ये जो टैरिफ्स जो लगाए हैं ट्रंप जी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उनको अधिकार नहीं है वो लगाने का। उनका यूएसए का सिस्टम उनको ये पावर नहीं देता है। उन्होंने लगा दिया है। वो केस अब कोर्ट में गया है और कोर्ट ने रूल किया है कि आप ये नहीं कर सकते, जिसके विरोध में द गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अगर ये नहीं होगा तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे फर्क पड़ेगा। तो वो ये केस कैसे चलता है आगे, ये हमें देखना है। इसको कहते हैं डिविजन्स ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंट के पास एक प्रकार का पावर है, उनके कांग्रेस के पास दूसरे प्रकार का। ये पावर जो उन्होंने दूसरी तरफ से लेके लागू किया है, इसकी लीगल बेस नहीं है। सवाल अब ये है कि जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी इन दिस केस, जो उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो रूल ऑफ लॉ का अमन करेंगे, या जैसे इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उनकी अंदरूनी डेमोक्रेसी पे भी इसका प्रहार होगा। ये देखना। मैं एक जाते जाते बस एक छोटा सा आपसे एक आर्ग्यूमेंट एक डिप्लोमेट ने किया था, जब उनसे वो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका कुछ भी कर ले, जैसा आपने बोला ना, वो फैक्ट्रीज लगा ले, वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकता, चाइना से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो वो भी एक फैक्टर है क्या कि अमेरिका में वो सस्ती फैक्ट्रीज नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। एक तो क्या वहाँ पे भी एक रिफॉर्म होगा? पर प्रयास तो किया है। वो भी डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। भारत ने भी 2 कमिटीज बिठाई हैं, कल ही पर बिठाई हैं 2 कमिटीज डीरेगुलेशन पे। यूरोप डीरेगुलेशन की बात, तो डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनके पास। अब वो बहुत ऊंचे चले गए हैं। तो ये नीचे जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, छोटे मोटे टूथब्रश, टूथपेस्ट, इसको बनाने वाले लोग नहीं। आपको एक और दुख भरा एक वो बताता हूँ, उन्होंने एग्जाम्पल देता हूँ। जो स्टाफ है उनका, मैक्सिकन स्टाफ, उनको तो निकाल दिया है। उसके कारण जो ओल्ड होम्स में जो अमेरिकन बूढ़े जो हैं, उनको केयर करने के लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि ये काम अमेरिकन करना नहीं चाहते। जो करते थे उनको वो रहने देना नहीं चाहते। तो इनका अब क्या होने जा रहा है, ये पॉलिटिकली कैसे आगे
बढ़ेगा या घटेगा, या इसको कैसे दबाया जाएगा, या इसकी सुनवाई होगी, ये देखना। रोबोट्स अभी तक तो आए हैं नहीं। तो ये जो पूरे नर्सिंग स्टाफ, उनका ओल्ड ओल्ड होम्स का स्टाफ, अगर वहां से उनको आप निकाल रहे हो फॉर राइट और फॉर रॉन्ग, इलीगल है तो निकाल दो वगैरह, लेकिन ये काम कौन करेगा? तो ये भी एक उनको अमेरिका पे समस्या है। तो 3 समस्याएं हैं। पहली, इन्फ्लेशन की, वो निश्चित है। दूसरी, रीस्ट्रक्चरिंग की, क्या वो बनवा सकते, अमेरिका फर्स्ट, मेड इन अमेरिका कर पाएंगे? मेरा विचार है नहीं। और तीसरी, जिन जो काम कर रहे हैं उनको आप निकाल रहे हो, तो काम करने वाले कहाँ हैं? आपका देश कैसे आगे चलेगा? Thank you so much, sir. Thank you for talking to us.